Hope I am audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, good evening, everyone. In last discussion, we discussed up to 20 questions. So, we'll see those who are fact based. So, as Chiranjit sir told, right? So, he will be taking care of those in upcoming discussions, and those who are basically conceptual oriented, I'll look at them mostly in the current discussions. Okay. So, we'll go to next question number 21. Question number 21 ରେ ତମେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କି consider the following statement regarding the types of good. Okay, another subtopic called types of good. Okay, the first option को ମୁଁ ଚାଲିଲି 111 222 333 444. See, in this question, if you can sure of only one option and 100% sure, ଯଦି ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛ କି this is wrong, then gone. Correct? No, you got the answer. ହଁ କି ନାହିଁ? See, ସବୁ ତକ ତ 75% option ରେ ଅଛି ନା. ଯଦି କୋଉ ଗୋଟେ ଅପସନ କୁ ମୁଁ 100% ଜାଣିଛି କି ଏଟା ଭୁଲ, ତାହେଲେ ମତେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ, ଏଇଆ ନା? ଓକେ, ଚलो. ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍, whether we know what are the different types of good or not. So ଯେତେବେଳେ types of good କହୁଛେ ସେଥିରେ public good ଆସେ, ସେଥିରେ free good ଆସେ, then ସେଥିରେ ତମର private goods ବି ଆସେ. ଓକେ, ତ now question ହଉଛି କି public goods are accessible to all, one person use does not reduce another's use. Is this correct? कि पब्लिक गुड एमिति गोटे गुड जोटा कि जदि जणे यूज करूची आउ जणे जदि यूज कलेटा सरी जीवनी आउ जणे भी सेटा यूज करि परिबो. Yes, okay, if this is correct, can I remove this one? 2 4. Okay, second, air and water are example of public good. Yes, air or water, everyone can use it, they don't have to pay the money, and जदि मु एयर टिके यूज कर देली एमिति नो कि आउ जण पय सेटा सरी जीवो. करेक्ट? नो, सो दुईटा भी ठीक अछि, दुईटा ठीक अछि, ताले सीटा भी कटि गला. नेक्स्ट, तीन को मु चलेबी. प्राइवेट गुड्स आर अवेलेबल ओनली थ्रू द मार्केट एंड बेनिफिट द बायर ओनली. प्राइवेट गुड्स आर अवेलेबल ओनली थ्रू द मार्केट एंड बेनिफिट्स द बायर ओनली. ओके, तो प्राइवेट गुड्स एई गुड्स जोटा कि मते किनिबा को पड़ी पारे एंड बायर सेटा को बिकिबो. ओके, तीनटा जदि ठीक अछि, ओके, देन मते केवल चारिटा. सी, एठु एक्चुअली मते तीन को देखिबारे नथला. बाय डिफॉल्ट 3 इज करेक्ट. Then I will look at 4. Road constructions under public-private partnership are purely public good. How come public-private भी अच्छी थी? Purely public good हबो ही नहीं. This purely itself is a wrong statement. हंग नहीं. तो चारटा को जो दी wrong कर देली, आंसर ही जो मोरो A. Okay. तो ताहले देखो public good. These are accessible by all. Used by one doesn't reduce others use. Private good not available to everyone. तामान तो पैसा देकी किनिबो. Available through market. Market through रे आसीबो. Market can be online. Can be offline also. Different types of market rate. It will benefit only the buyer. Buyer will get the money. Correct? Yes. Then example like car, motorcycle, mobile phones, etc. PPP, public-private partnership. Sethire, this is neither public nor purely private. So these are man-made goods with traits of both. Basically, it is public as well as private. Basically, government भी एथिरे किछि invest करे and private company माने भी किछि invest करନ୍ତି. तो सेथिरे बहुत सारा प्रोजेक्ट आसे ना, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स. ओके, so we don't have to discuss that. Anyway, next, organization with the most peak established itla CSO, NSSO, NSC, NSO. Straightforward, this is completely fact based. Correct? No, तो most peak केबे organization हेतिला, से organization केबे start हेतिला, तार काम कोन. Similarly CSO रो काम कोन, NSSO रो काम कोन, NSC रो काम कोन, and NSO रो again कोन काम. तो एटा मु रखि दोजी. तो you can just go through. Okay, एथिरे किछि एक्स्ट्रा नाही जोटा मते बुझिवार अछि. तो you can go through and answer it. Okay, and Chiranjit sir एटा नै जियो तमर discussion बडे. Consider the following statement regarding the items that is excluded from what? National income calculation. कि GDP GNP वाला concept. तो एथिरे first option national income रू एटा को मु exclude करूची. तो there are certain intermediate goods excluded to avoid double counting. See, there is a concept of national income, right? GDP जଣା थिबो जदी, then तमे जानि थिबो GNP रो concept, GNP at factor cost, आ गोटे GNP at market price थाए. हां कि नहीं? तो GNP at factor cost आ market price भितरे गोटे concept थाए tax आ subsidy रो, sorry, tax आउ subsidy. Then GNP रो calculate हबो depreciation cost जो through NNP आसीबो. NNP रो calculate हबो national income. Okay, so national income concept रे से मते पचारछु बर्तन कोन कि आपु टिके ओवरऑली देखि दबो. ठीक अछि? तो excluded item कोन कोन national income रो. तो जदि तमे देखो the excluded items
includes intermediate good जदि गोटे प्रोडक्ट तैयारी हेची and ताको further complete consumption करके आ गोटे separate good आसी जाउची complete consumption हे गला जदि ताले ताको मो करिवेनी is that clear for example मोरो चा पत्ती आसिला चा पत्ती को मु बर्तन कंप्लीटली चेंज करके चा रे बने देली एंड चा को अगेन कंप्लीटली कन्वर्ट करके मिल्क बने देली चा पत्ती टंकाटे पडुतला पत्र लिप्स ओके लिप्स टंकाटे थिला देन मु ताको कोटी काटी की गुंड कर देली भाबिना सेटा को मु 5 टका रे बिकिली जोटा की चा ताको पैकेज करके बिकिली भाबिना 10 टका रे देन फाइनली मिल्क वगैरह यूज करके फाइनल प्रोडक्ट जेतेले मु प्रोडक्ट को मार्केट को बिकुची सेतेले भाबो कोटे क्षीर चा तुमको 20 टका पड़ुची देन आई शुड नॉट यूज दिस इंटरमीडिएट स्टेप्स ए इंटरमीडिएट गुड गुडा को मु यूज करूनी इज दैट क्लियर मु ताले कैलकुलेट करबी नेशनल इनकम जेतेले मते फाइनल गुड टा को नेकी जिबार अछि होप इट इज फाइन जदि कोन गोटे मझिरे इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स जोडा मझिरे कंप्लीटली कंजम्पशन हे ही जाई कंप्लीटली सॉरी ही जाई ठीक अछि फाइन ओके old goods produced in previous year are included old goods produced in the previous year that is also not included why that is not included because सेटा तो पूर्व वर्ष रे ही कैलकुलेशन रे आस जाइथिबो ना नेशनल इनकम रो पूर्व वर्ष रे ही कैलकुलेशन रे आस जाइथिबो देन एथर काहे मु ताको पुणी फर्दर कैलकुलेट करबी आई शुड नॉट कैलकुलेट सो दुईटा को काट देबी जब दुईटा को काट ताले तो मते आंसर ही मिल गला एकटा तो ठीक थिला दुईटा को जदि काट देबी आंसर मिल गला गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन्स आर एक्सक्लूडेड यस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स गुडा से गुडा एक्सक्लूड कर तो तमे देखि दियो ठीक तो एक्सक्लूडेड आइटम्स फ्रॉम नेशनल इनकम गोटे होची इंटरमीडिएट गुड ओल्ड गुड्स जोडा की एई वर्ष करंट ईयर रे प्रोड्यूस हेनी से गुडा को मु इंक्लूड करबी नै गवर्नमेंट रो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स पेंशन हे जाऊ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो बेरोजगारी भत्ता तुमको मिलुची दोस थिंग्स आल्सो विल नॉट कैलकुलेटेड ओल्ड एज अलाउंसेस वृद्धा समय रे जो भत्ता मिलुची से गुडा भी कैलकुलेट करा हबनी ठीक अछि दीस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल ओके नेक्स्ट कांसेप्ट with reference to the expenditure method तो जीडीपी कैलकुलेशन करिया पे देयर आर डिफरेंट मेथड्स करेक्ट नो गोटे होची एक्सपेंडिचर मेथड गोटे होची इनकम मेथड ठीक अछि आ गोटे होची फैक्टरी बेस्ड जीवीए मेथड ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला कांसेप्ट फैक्टरी वाला फैक्टरी मेथड तो गोटे होची एक्सपेंडिचर मेथड जेतले एक्सपेंडिचर कथा कहउची सीआईजी x माइनस m रो चले ठीक अछि तो कंजम्पशन बाय द पब्लिक then investment वगैरह then government रो expenditure then export minus import रो concept okay तो इथि कहउची ना with reference to the expenditure method जोटा कि जीडीपी रो कैलकुलेशन रो मेथड consider the following statement तो से कहउची कि how many of them are correct answer correct कोन कोन ठीक अछि it measures the total spending on final goods and services yes not intermediary correct ठीक अछि ना टोटल स्पेंडिंग जहां तमे सी एक्सपेंडिचर केते खर्च करूछो से खर्च तमे फाइनल गुड्स रे केते करूछो नॉट की कंजम्पशन रे ओके नॉट की इंटरमीडिएट फाइनल गुड एंड सर्विसेज रे ठीक अछि एकटा तो ठीक अछि जदी एक ठीक अछि बी मोर कटि गला नेक्स्ट मु दुईटा को देखिबी नेट एक्सपोर्ट्स आर कैलकुलेटेड एज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट is it import minus export or export minus import if you see x minus m मु लिखि राइट तो x होची एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ठीक अछि m means import so export minus import that means this is wrong net exports calculated as imports this is a reverse way reverse लिखा छै जोटा कि एको स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देला दुई को काटि देले यदिटा नेक्स्ट मते केवल गोटी स्टेटमेंट देखिया अछि दैट इज ओके व्हाट इज 3 government final consumption expenditure is also included yes government ro final consumption is also included correct CIGXL बुझियला कार डाउट अछि ओके तो इफ यू सी जीडीपी जदी मेथड फॉर फार्मूला कि CIGXM फॉर प्राइवेट लोकंगर फाइनल कंजम्पशन आई इज फॉर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करूची जी फॉर गवर्नमेंट फाइनेंशियल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर x minus m export minus import so statement 2 टा रॉन्ग है जी रिवर्स रे थिला चलो 25 नंबर क्वेश्चन तो से incorrect pair okay I think this question is also not in a proper set correct no incorrect pair means option को भलिया थिबो only 1 only 2 only 3 or all 4 or none of them ए भलिया थिबा दरकार correct no see list 1 एठी list 1 एपटे list 2 होंगे नहीं ए एटा बी एटा सी एटा डी बतन तो मत को गिवन गुड
then आको मु केमती चेक करी 1A 1B ए भलिया चेक करी होनी. This is a different way of जेमती दिया. This is confusing. So first of all मु ताहले तुमको कहि दउची. तो giffen good, Veblen good, inferior good, prestige good. Okay. तो आमे लास्ट टाइम मने पका Veblen good मु कहिथिले ना. What is Veblen good? कि एमिति किछि गुड जहार प्राइस बढ़िवा सहित तार डिमांड भी बढ़िबो. हो कि नहीं? बिकॉज सो बाजी रे चलिबो. जदि सलमान खान हाथ रे गोटे पिंधिले से जो ब्रेसलेट, not exactly luxury, you can say it is basically how they are marketing that product through different celebrities. तो तुमको लगे कि भाई तार प्राइस बढ़ी जाउसी, सलमान खान गोटे हाथ रे गोटे पिंचोंदी भाबिनो ब्रेसलेट, देन सेटा को मते किनियार अछि, ता प्राइस जहा भी हो. Those kind of goods will be like price versus quantity ro graph. Price versus quantity ro graph जदि बढ़ुची, that will be a Veblen good. Inferior good मु तुमको कहली कि there are जते तमे income versus quantity कहउछ, तम income जते increase होची, there are certain inferior goods जो गुड्स गुडा को तमे प्रिफर करिवोनी कंजम्पशन करिया पय जते तमर इनकम बढ़ुची. तो इनकम बढ़िले कंजम्पशन तमर कमी जिवो. This will be the graph for inferior good. There will be something called giffen good. Giffen good भी same concept कोन ना जदि तमर प्राइस बढ़िबो से गुड्स गुडार डिमांड और क्वांटिटी कमी कमी चलिबो. प्राइस बढ़िले और जनरली ताको रिवर्स करे नै, प्राइस बढ़िले गुड्स रो पड़िबो कोन ना डिमांड बढ़िबो. मोस्टली दोज विल बी द लग्जरी वाला गुड. Giffen good, luxury वाला good. But Veblen good is a concept related to so बाजे demonstration effect. कि जदि के गोटे डेमोन्स्ट्रेट कला कि भाई मु ए आईफोन किनुची तो ताकू देखि कि लोक किनि देबे, चाहे प्राइस टिके भी बढ़िले भी किना हो. प्रेस्टीज गुड इट इज मोस्टली रिलेटेड टू लग्जरी गुड्स. ओके, बट ग्राफ विषय जदि पचरा जनरली गिफेन गुड और इन्फीरियर गुड लिटिल बिट सिमिलर. गोटे खाली एटा होची प्राइस वर्सेस क्वांटिटी एंड एटा होची तमरो सॉरी giffen is yes price versus, and this is income versus quantity. But anyway, so if you see giffen goods किए देथिले ना सर रॉबर्ट गिफेन से कहउछनी डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस. किछि किछि प्रोडक्ट एमति थिबो जोडा लग्जरी टाइप रो प्रोडक्ट तार डिमांड इंक्रीज करबा जदि प्राइस टिके टिके बढ़ला. फॉर एग्जांपल गोल्ड को लोक देखले कोन भाई प्राइस बढ़ुची तथापि किना होची. Veblen good it is like सो बाजी आई डोंट नो एक्सपेंसिव कार वगैरह कि हां बेसिकली आको तुम नवा सो बल कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को जाए. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट concept कि डिमांड इंक्रीजेस as प्राइस इंक्रीज. यस सर मोर खाली गोटे डाउट ए जो सर सपोज गोटे हमें पेंटिंग नवा माने पुराना एंटीक वाला मोनालिसा जा भी हो सर सेटा सपोज बहुत एक्सपेंसिव हला आउ सेटा सर बड़ी बड़ी प्राइस गला किंतु लोक ताको किनिबा को चाहउछथि. सर सेटा हमर गिफेन रे जीवो ना भेबलेन रे जीवो. सी भेबलेन होची जतले 100 बाजी होची एटा जीवो तमर गिफेन रे. ओके सर कहीं ना एठी एमिति न हो कि सेटा कि गोटे किनि देछि तमे किनिया को पुनी चाहतो. बिकॉज यार जदि तमे देखिबो ना इलास्टिसिटी ठीक अछि ना, इलास्टिसिटी तार जीरो ही जीवो मींस इट विल बी कंप्लीटली इनइलास्टिक प्रोडक्ट मींस बिकॉज क्वांटिटी तो गोटे ना. फॉर एग्जांपल मोनालिसा प्रोडक्ट या फिर तमे भाबिना विराट कोहली से गोटे बैट रे साइन करके देइ गले करेक्ट नो. दैट विल बी ओनली वन प्रोडक्ट राइट. ओके देन से प्रोडक्ट रे तमे ऑक्शन रे चलुचो चाहे प्राइस किछि भी एपटे मु कोन कहूची क्वांटिटी विल बी ऑलवेज वन ओनली करेक्ट नो. गोटे ही प्रोडक्ट प्राइस बढ़ी बढ़ी चलिबो ताले तमरा इलास्टिक डिमांड कोन हो जदि ग्राफ देखिबो ना इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. इज दैट क्लियर? ताकू कोनती कंप्लीटली इनइलास्टिक and generally these products are very few products will be completely inelastic. डे टू डे लाइफ रे एडा यूज होनो तो सेते तो कना विराट कोहली सब 20 टा 25 टा 100 टा बैट रे डेली सब बैट रे से सिग्नेचर करना गोटे बैट रे सिग्नेचर कर देते दैट बैट विल बिकम inelastic डिमांड. इज दैट क्लियर? ओके थैंक यू. Next question. Consider the following statement related to national sample survey. Okay, I'll keep it. Okay, basically this is related again fact. If you see all are fact. National sample survey started in 1950 NSO you have to remember. Okay, this is 1950 वाला concept and national sample survey started ହେଇଥିଲା जोटा कि NSO national sample survey national sample organization. So NSSO if you see national NSSO conducted economic survey till 2019 independently. This is wrong. Second option wrong he gala. Jodi second option wrong he gala, then mo pakare either option bolla 1 or 1 3. Okay, 3 bhi achi. 3 after 2019 NSSO and CSO yes they are the components under NSO. तम जो तमे देखियो ना CPI वगैरह जो तमे कैलकुलेट करछो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह तो जनरली को मारे बात करे ए माने कैलकुलेट करते मोस्ट बी अंडर रे. ठीक अछि. सो जब तमे देखियो नेशनल सैंपल सर्वे इट स्टार्टेड इन 1950 because
1947 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ କୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଇକୋନୋମିକାଲି वी आर नॉट दैट स्ट्रांग जेहेतु आमे स्ट्रांग नाहु ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ଗୋଡା ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर व्हाटएवर रिसोर्स वी हैव टू मेक सर्टेन प्रॉपर प्लानिंग जोटी ପାଇଁ 1950 रे से धीरे 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 इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रे भाबिबा ପାଇଁ ଲାଗିले सो 1950 रे नेशनल सैंपल सर्वे आसिला जे गोटे सर्वे करिवो 1950 इट वाज नोन एज एनएसएसओ टी 1970s एंड 71 इंदिरा गांधी को पीरियड आसी सी टाइम रे 1969 होप यू हैव रिमेंबर एंड 1975 इमरजेंसी वाला पीरियड करेक्ट नो ता भीतर बहुत सारा यात्रा हेची 1970 रो 71 रे till 1990-71 it was known as NSSO then functions कौन ना it will conduct economic survey so you remember बर्तमान होची कौन फेब्रुआरी 1 रे आस जीवो तमरो बजेट करेक्ट नो तो बजेट पूर्व आसीबो कौन इकोनॉमिक सर्वे हां कि नहीं जनवरी 31 so what economic survey contains anyone economic survey कौन रखिता है and what is the difference between economic survey and budget यही तो वो सर बजेट टा अपकमिंग सेशन पे एटा करथा इकोनॉमिक सर्वे टा प्रीवियस माने एबे 2025 रे जा जा सब हेतला सेटा रिप्रेजेंट करे is it necessary to have okay is it necessary to have economic survey to have budget यस सर why सर ताकि ने डिफरेंशिएट करियो गवर्नमेंट ठीक से जानि परिबे डेटा सब रहबो ओके सुपर ठीक अछि जहा तुम कहला ठीक अछि तो तमे मने अछि ना बजेट टाइम रे गोटे कट मोशंस वगैरह आसे पॉलिसी कट मोशन इकोनॉमिक कट मोशंस है ना भाई बजेट टाइम रे डिबेट डिस्कशन वोटिंग तो हुए कि से माने जो कहबे कि भाई मु अप्रोप्रिएशन बिल गोटे मागुची से बिल रे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड अछि किए कहबे तो देखिबो ना एथरा जेतले फेब्रुआरी 1 हबो केतले संसद टीवी वगैरह ऑन करके देखिबो कि डिमांड किए मागुची तो फाइनेंस मिनिस्टर आसीबे लोकसभा रे से गोटे पर गोटे डिमांड मागिया स्टार्ट करियो कि माय गवर्नमेंट इज गोइंग टू आस्क दिस मच मनी एंड माय गवर्नमेंट इज गोइंग टू आस्क दिस मच मनी फॉर एग्रीकल्चर दिस मच मनी फॉर डिफेंस तो ए जो दिस मच मनी ए पैसाटा कोठ आछी बजेट रा मनीटा जो आलोकेट हबो से मनीटा जेतले गवर्नमेंट को आलोकेट हबो एटा कोठ आसीबो बजेट रा मनी इंडियन ए पैसाटा कोठ आसे को फंड रो सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसोलिडेटेड इंडिया ओके तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो पैसा से गुडा कहा पैसा एक्चुअली सर आम मानकर जो टैक्स पब्लिक रो टैक्स टैक्स करेक्ट Tax. त माने पब्लिक रो पैसा से पैसा को खर्च करिया पे मागुची किए फाइनेंस मिनिस्टर माने गवर्नमेंट मागुची माने अप्रूवल हु इज गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सर इन दिस पीरियड लेजिस्लेटिव माने सर पार्लियामेंटरी अप्रूवल रहउची ना तो खर्च करिया पे तो ए पीरियड नाउ यू टेल मी फाइनेंस मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर सर श्योर यस यस सर यस no see any minister they are considered to be executives they are not legislature सेतेबेले जेतेले से माने पार्लियामेंट रे वोटिंग करूचंदी बट नाउ दे आर गोइंग टू डू एग्जीक्यूशन वर्क राइट कि से माने पैसा मागुचंदी तांको गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज नॉट लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को तुम सी हु इज लेजिस्लेचर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर सी मुझे सी डेफिनेशन ओडा आसेनी बट एटलीस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर राइट कि लेजिस्लेचर माने कोन जहा को लोक बाछि थांती एया ना होंगे नहीं भाई नेता यस सर मत तमे को मंत्री को लोक बाछंती नो सर ना सर बेसिकली तांकर मेजॉरिटी रे चले ना तो मंत्रीज आर लाइक मिनिस्टर्स आर लाइक व्हाट दे आर एग्जीक्यूटिव्स सो फाइनेंस मिनिस्टर जेतले मागुची फाइनेंस मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव नाउ एग्जीक्यूटिव इज डिमांडिंग द मनी डू द पीपल ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव सेकंड क्वेश्चन लोक को एग्जीक्यूटिव को ट्रस्ट करिसंती की मत तमे को लोक काहा को ट्रस्ट करंदी काहा को ट्रस्ट करंदी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काहा को ट्रस्ट करंदी सर लेजिस्लेचर ना सी तमे वोट सी इन इंडिया जदी कॉन्स्टिट्यूशन तमे पढिबो जेतो तमे प्रिएम्बल पढिबो सेठी स्टार्टिंग रे लिखा हितो ना विथ द पीपल ऑफ इंडिया सो द पावर बिलोंग्स टू विथ द पीपल हां कि नहीं देन एई पावर ता तमे ट्रांसफर करजो ड्यूरिंग द डे ऑफ वोटिंग काहा को तमे दोजो वोट देई पावर ता तमे काहा को दोजो तम लेजिस्लेचर को ना तम नेता को करेक्ट सांसद हो या तम एमएलए हो ट्रू तो ताहले सबुठु अधिक लोक ट्रस्ट काहू करिसंदी लेजिस्लेचर को बट पैसा मागुची की लोकों का पैसा मागुची एग्जीक्यूटिव देन एग्जीक्यूटिव कोन आराम से पैसा नहीं जीवो
नहीं परिवन ना लोकों को पैसा भाई लोकों को परमिशन दरकार लोकों को पाई परमिशन किए दबो सर एमपी लेजिस्लेचर legislatures देवे that's why in parliament approval without approval of parliament not a single penny from the consolidated fund of India can be withdrawn correct यस सर Yes, sir. okay if you are very clear on that part then my second point कि जदि लोकंकर पैसाटा गोटे गवर्नमेंट नब जे कि एग्जीक्यूटिव जहाँ को लोक केबे ट्रस्ट ही करिनी लोक ताहाले से गवर्नमेंट पुणी आसी कोच कि भाई मते आउ पैसा दियो आउ पैसा तो गोटे लोक सेतिक बेले दबो जेतले लोक को तार हिसाब दरकार कि पूर्व थरा जो पैसा मोर नेइथिलु तार तो हिसाब दे होंगी नहीं यस सर ता हिसाब रा इकोनॉमिक सर्वे super so you understood why economic survey has to come one day before because it will contain all the data of the previous year such that the people will get to know कि last time से माने जति पैसा नहीं थिले से पैसा रे से माने कले कोन ताकि एथरा जति पैसा मागुचंदी देन आमे से पैसाटा को सैंक्शन करिवु ना करिवुनी hope it is fine right यस सर okay चलो so तो NSSO और NSO जहाँ तमे कहउछो तो तारो काम थिला कि इकोनॉमिक सर्वे को नेके से पे ठीक अछि फंक्शंस थिला May 2019 ପରେ Modi government the mostly merged CSO and NSSO both now worked as a component under NSO. So NSO ବର୍ତ୍ତମାନ National Statistical Organization बनिकी रहिला करेक्ट नो जे कि नेशनल सैंपल सर्वे NSSO जहाँ थिला से सब मर्ज हे गला एंड वर्तमान कार्य चलची ना मोस्पी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन थ्योरी कांसेप्ट माल्थुसियन थ्योरी ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी डाल्टन थ्योरी एडविन कैनन एंड हेनरी सीडिंग so I will keep this for further discussions मु बे डिस्कशन करूनी पॉपुलेशन टाको so चिरंजीत सर एटा तम सहित डिस्कशन करिवे ठीक अछि because these are just theories that you have to remember next question I will go to those who are concept oriented I will go to that and I will try to clarify the concepts okay ताकि बहुत जल्दी हमको सरिया भी अछि एटा consider the following statement income effect shows the impact on demand due to change in income caused by price change okay again this is something related to what कि इनकम इफेक्ट विषय पचारि तो फर्स्ट कथा हो कि एथिरे मते पचारि करेक्ट इनकम इफेक्ट shows the impact on demand due to change in income caused by the price change कि इनकम तमरो चेंज होची जोथि पय कि तमे सी जदी इनकम चेंज होबो ताले तमे डिमांड अधिक बढ़ेबो होंगे नहीं Yes, sir. ओके तो से कुछ एक्चुअल इनकम इफेक्ट कोन ना इट इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू प्राइस चेंज सी गोटे साइक्लिक कॉन्सेप्ट थाए करेक्ट फॉर एग्जांपल मु गोटे एम्प्लॉय मु वर्तमान गोटे फैक्ट्री रे काम करूची ठीक अछि भाबिनियो मार्केट रे ऑलरेडी इन्फ्लेशन हे जायछि व्हाट इज इन्फ्लेशन मार्केट रे इन्फ्लेशन इन द सेंस सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स रे प्राइस बढ़ी जायछि नॉट ओनली वन गुड सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स रे प्राइस बढ़ी जायछि एमिते टमाटो आज 20 टका थिला काली 20 टका थिला आज 50 टका गला ताले मार्केट रे इन्फ्लेशन हे गला ना ना केवल टमाटो बेसिस रे नो गोटे बास्केट मु देखिबी सेथि में तो सीपीआई यूज करछ ना होंगी नहीं ओके तो गोटे बास्केट ऑफ गुड्स रो जदी प्राइस नॉर्मल प्राइस टू बढ़ी के अछि 10-12 टा गुड्स नहीं गली जरा पड़ला कि सबुरो प्राइस बढ़ी के अछि तो मार्केट रे इन्फ्लेशन तो मार्केट रे मु आज लेबर भाबिने मु गोटे लेबर मते मास दिन को 250 टका मिलुछि गोटे फैक्ट्री रे मु काम करछि 250 टका मिलुछि बट काली जति की जे थिला तेल को माने मोर मिनिमम बेसिक नेसेसिटी मते गोटे दिन को निहाती भाबिना 100 टका खर्च करिया पड़ुछि प्रति दिन मोर घर पई 100 टका खर्च करिया पड़ुछि बट मते लागुछि कि वर्तमान 100 टका रे मते प्रतिदिन 200 टका खर्च करिया पड़ुछि ताहले मार्केट रे कोन अछि इन्फ्लेशन ताहले मु कोन कहिबी 250 टका जगह को मु वर्तमान कहबी कि भाई गोटे काम कर मु 250 टका काम कर परिबिनी बिकॉज़ मार्केट रे 200 टका मते तो खर्च करिया पड़ुछि आगु 100 टका खर्च करथली 150 टका मोर बचुथिला एबे 150 टका भी मो पाखरे नाही तो तमे मोर प्राइस टा उटिके बढ़ाओ दैट मींस जदी मार्केट रे इन्फ्लेशन हबो बिकॉज़ ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ द प्रोडक्ट डेफिनेटली इनकम ऊपर भी असर पड़िबो होंगी नहीं यस लोकंकर प्राइस इनकम टा भी बढ़िबो ना ट्रू yes so income effect shows the impact on demand due to change in income caused by the price change जदी price change होला ताहले income change होबा जदी income change होबा demand भी change होबा फाइन तो वन टा तो ठीक अछि जदी वन टा ठीक अछि सी टा तो कटि गला देन price effect shows change in demand due to change in price yes price effect कोन जदी price change होला price आउ demand रो कर्व कोन price जदी कमिला demand बढ़िबो एया ना Yes, sir. प्राइस बढ़िले डिमांड कमिबो सो
दुईटा भी ठीक अछि जदि दुईटा ठीक अछि ताले एटा भी कटला देन मते मिलुची 1 to 4 ताले 4 टा तो मते पडिया नै केवल 3 टा पडिबी अल्फ्रेड मार्शल फर्स्ट एक्सप्लेन द इनकम प्राइस इफेक्ट यस दिस इज फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर कि अल्फ्रेड मार्शल थिले जे की फास्ट एक्सप्लेन करथिले इनकम वर्सेस प्राइस रो इफेक्ट इनकम इफेक्ट आउ प्राइस इफेक्ट कि इनकम बढ़िबो जदि प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िला इनकम बढ़िबा सहित डिमांड भी लोकंकर बढ़िबो कि प्राइस टिके बढ़ला ताले इनकम भी बढ़ी जिवो एंड डिमांड भी जदि धीरे धीरे इनकम बढ़िला ना देन ताकर डिमांड भी बढ़िबो कि भाई हम आउ टिके डिमांड पड़ी डिपेंड करे कि इनकम आउ डिमांड भितर ग्राफ कोन बनुची प्राइस केते अधिक हो जायछि जदि जना पड़ला कि बहुत अधिक हो जायछि हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशन सेठी अनएम्प्लॉयमेंट भी आसियो एनी आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बट यस कोटा कोन अछि ना नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव यस इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव नॉर्मल गुड पई एमिति ग्राफ कि जेताले लोकंकर इनकम एपटे एंड दिस इज क्वांटिटी इनकम इफेक्ट कोन नॉर्मल गुड पई कि जदि इनकम लोकंकर बढ़िला क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़िबो मींस डिमांड बढ़िबो बुझियला प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव कोन ना जदि मु ग्राफ बनेबे प्राइस वर्सेस डिमांड जदि प्राइस बढ़िला डिमांड कमिबो प्राइस कमिले डिमांड बढ़िबो प्राइस को मु कमेली डिमांड बढ़ी बढ़ी चलला दिस इज व्हाट इज शोइंग अस नेगेटिव ट्रेंड इज दैट क्लियर these are microeconomics okay 29 number question SDG I think Chiranjeev sir तुम कहिथिले ना SDG सी मने रखि दबो SDG 1 to नै कि 17 टांग SDG hopefully you should able to remember it in tips of friends केते जनकर मने अछि के जन मने अछि कार मने नै मन अच्छे सर चलो सी केमिति केमिति करा बट ताकू मने रखो तमे किछि भी ट्रिक लगाओ बट मने रखो ओके आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट बिकॉज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कि को एसटीजी कोन consider the following statement regarding the Indian currency facts and symbol okay these are certain facts कि इंडिया रो करेंसी रिलेटेड तो एथिर ऑप्शन अछि कोन पेपर करेंसी इश्यूएंस अंडर गवर्नमेंट मोनोपोली बिगन 1861 1861 ପରେ करेंसी इश्यू हेछि बोली जन कहउछन चलो decimal system of currency was adopted in 1957 decimal system of currency Indian rupee symbol was accepted in 2010 and designed by D Uday Kumar तो एथुरु केतेटा ठीक अछि व्हाट आर द ऑप्शंस तो जदि तमे देखियो 1 and 2 2 3 1 2 3 1 ओनली ओके चलो सो ये होछ गोटे जेन्युइन फैक्ट कि आपको मन रखियो कि गोटे कोथर गोटे एग्जाम रे आसेतला आई थिंक सीएपीएफ और सीडीएस आई डोंट नो एग्जैक्टली बट कोथर गोटे दास जेतला डी उदय कुमार आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर मे बी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशंस oh sorry IIT Mumbai so if you see paper currency in India government monopoly 1861 ପରେ ମନେ ପକାओ 1857 ର कहानी होंगी नहीं देन मने पकाओ 1860 61 ର कहानी इंडियन काउंसिल एक्ट गोटे आस देतिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चार्टर ପରେ मॉडर्न हिस्ट्री यस तो ता ପରେ जेतले क्राउन टेक ओवर कले ना ब्रिटिश क्राउन कि प्रिंसेस आसी गले तो ता ପରେ 1861 रे पेपर करेंसी रो इंट्रोडक्शन हे वाला डेसिमल सिस्टम अडॉप्टेड इन 1957 100 वर्ष ପରେ सिपाही विद्रोह 100 वर्ष ପରେ सी जोडा तमे टिप्स रे अछि ना जोडा तम माइंड रे अछि सेही माइंड सेट सहित तमे ताको अलाइनमेंट करो कि हां चलो सिपाही विद्रोह हेतला तार 100 वर्ष ପରେ डेसिमल सिस्टम अडॉप्ट हे वाला केदि तमे कहू 10 टका 50 पैसा सो जो डेसिमल सिस्टम 1957 ପରେ अडॉप्ट ହେଲା इंडियन रूपी सिंबल जोटा प्रेजेंटली तमे जो रूपी रो साइन देखुछो इंडिया बिकेम द फिफ्थ कंट्री टू हैव इट्स ओन करेंसी सिंबल इट इज ए लिपि रिलेटेड टू देवनागरी लिपि एंड रोमन आर भलिया देखा जाइए रूपी बट देवनागरी लिपि अनुसार ये बना है जी एंड उदय कुमार जे के आईआईटी मुंबई रो एंड इट वाज एक्सेप्टेड इन 2010 महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट जोटा इट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1987 ऑन 500 नोट्स on all notes since 1996 ପରେ ସବୁ notes रे महात्मा गांधी का फोटो आसी गला language there are 17 language hindi and english plus 15 language panel में तमर पछपटे मिली जिवो ओके consider the following statement perfectly elastic demand again microeconomics okay चलो perfectly elastic demand has elasticity equal to infinity and demand curve parallel to x-axis is it correct okay perfectly see inelastic time mu kahile ki this will look like this paper currency 1770 bank of bengal 1935 RBI what is this paper currency has been come 1970 is it
सर 1770 रे फर्स्ट बैंक ऑफ बंगाल रे इंट्रोड्यूस हेतिला तापर आरबीआई रे 1935 रे हेतिला बोलते सेटा अच्छा दिन मते देखिया पड़ो बिकॉज आई डोंट गो इनटू मच दैट फैक्ट ओनली तो गवर्नमेंट मोनोपोली आफ्टर पेपर करेंसी एठी तो कहौ छी 1861 तो तमे कहौ 1770 और 1970 सर 1770 रे चेक करिया पड़ियो बोलते इंडिया रे सेटा बैंक ऑफ बंगाल रे थिला उठे पढ़िथिली कोठी टिके देखि नबो ठीक अछि तो सेही अनुसार चिरंजीव सर आज्ञा को सर एपी से एटा को रिफ्रेम कर देबे ओके तो ठीक अछि मु आपको डॉट बोले दउ छी रीचेक मैं पीडीएफ टा पठे देबी ठीक अछि इंसान को चलो सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट perfectly elastic demand has elasticity equal to infinity see inelastic ପାଇଁ like this graph correct होंगे नहीं this is let's suppose demand curve for example price out demand तो मु जानछि प्राइस आउट डिमांड रो कर्व समथिंग लाइक दिस होंगे नहीं जनरल नॉर्मल गुड पई एमती रहया कथा किंतु इनइलास्टिक जदी हे गला एमिति हे जिवो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक मींस चाहे प्राइस किछि हो तो से प्राइस गोटे कांस्टेंट अछि डिमांड अनलिमिटेड मींस जदी प्राइस टंकाटे ऊपर को गला ताहले मु किछि नेबिनी जदी प्राइस टंकाटे भी को गला ताहले मु किछि नेबी एक्जेक्टली 10 टंका हाले मु अनलिमिटेड अमाउंट रो किनिबी दिस इज ए हाइपोथेटिकल कांसेप्ट सो परफेक्टली elastic demand has elasticity equal to infinity yes it is infinity demand curve parallel to x axis yes this is correct jodi one correct अछि eta to wrong he gala second perfectly inelastic demand has elasticity 0 and yes this is elasticity hochi 0 and it is parallel to what y axis this is also correct duita jodi thik अछि eta bi wrong ताले तीन एटा तमके पढियार नै केवल चारि मु पढिबी in a monopolistic competition products are identical and price is uniform you know what are the different type of market monopoly wala monopolistic market yes so what it says monopolistic competition products are identical and price is uniform no products are little bit different hoye nahi for example you can say monopolistic re there will be few buyer many sellers sorry there will be many seller many buyer what I am writing many buyer correct give me a second I'm saying monopolistic competitions so there will be many buyer किनिया ପାଇଁ बहुत लोक थिबे but seller will be seller fewer seller ता माने कोन for example iPhone company Samsung company correct although the products are similar but little bit different correct no होंगे नहीं yes sir okay तो ए केस रे ना हां रेट विल बी आल्सो डिफरेंट नेक्स्ट कहूची कोन ना एमिति नुह कि यांकर गोटे निजर गोटे फैन बेस थियो फॉर एग्जांपल आईफोन यूजर ना से सबले प्रमोट करथु आईफोन को रेट जहां भी हो से सबले आईफोन ही यूज करियो सैमसंग तो से नबो ही नहीं सिमिलरली सैमसंग या फिर तमे नहीं जाओ ओप्पो vivo या फिर से आईकू या रेडमी मोटरोला so these are different brands right they have their own fan base चाहे रेट किछि भी हो से माने संगे संगे स्विच करबेनी एमिति न कि सैमसंग जदी आज जो प्रोडक्ट ता तार 20000 टका मिलुची जदी सेटा को 25000 गला संगे संगे से लोक तार जो फैन बेस थिला से माने आईफोन को स्विच कर दे करबे ही नहीं से माने स्टिल इट विल बी लीगली टू सैमसंग से माने सैमसंग ही फैन बेस ही रहबे दिस इज व्हाट वी कॉल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बुझियला so the products are identical this is wrong the products are little bit different and price is not uniform also price will be changed ठीक अछि so product differentiation design color set many buyers and sellers will be limited limited in the sense एमिति कि 2-3 जण there will be number of sellers but not like millions number of sellers no example toothpaste brand like Colgate close-up तो जे Colgate यूज करतो से Colgate ही यूज करिवो जे close-up यूज करतो से close-up ही यूज करिवो चाहे से 20% एक्स्ट्रा 30% एक्स्ट्रा से किछि भी दो जोजना बुझो then there will be few people those they will go to mall देखि जो ना से जो सुपरमार्ट मु भी बेले बेले जाए जेतले मु भी जीबी से जो जियो मार्ट रे मु देखबी गोटे फ्री होंगे नहीं कि कार कॉस्ट केते कोन अछि मते फरक ही पड़ेनी माने सेटा को ब्रांड रो अछि तो बिकॉज़ आई एम नॉट लॉयल कस्टमर टू ए पर्टिकुलर ब्रांड देयर विल बी few people राइट ठीक अछि ना नहीं समझते
कि भाई मु केवल जी ऑलरेडी ब्रांड यूज करथि से माने डेफिनेटली दे विल फॉलो द ब्रांड्स करेक्ट कि ठीक अछि सेंसोडाइन यूज करबी देन मु कोलगेट यूज करबी क्लोजअप यूज करबी कि डाबर या फिर किछि दिबे पतंजलि वाला हाउ मेनी ऑफ देम यू आर पतंजलि वाला ओनली पतंजलि yes Patanjali okay no issue so similarly there will be few people who will be Dabur Sensodyne okay anyway so you understood right the concept monopolistic not identical product little bit different product based on see product ro jodi dekhibo ki product hoji toothpaste but all toothpastes are not same correct no कोई टिके अधिक मेरे टूथपेस्ट में नमक है तुम्हारे में नमक है क्या एडवर्टाइजमेंट आसे ना so little bit different okay composition might differ okay chalo next question with reference to functions and evolution of the currency consider the following statement तो पचाते कौन functions and evolution of currency रो evolution की बात कहि परियो currency रो evolution केमथि हेतु what do you think initially कौन थिला barter system थिला सर इंडस वैली टाइम रे then barter ପରେ केटल वाला सिस्टम आसिला kettle माने एक्सचेंज सर ऐसे जो कार वगैरह सब एक्सचेंज टाइप इस काइंड ऑफ barter थिन थिला सर सेटा रे okay gold silver coin तो डायरेक्ट आसनुला काउरी okay कौड़ी ना कौड़ी okay that is called commodity okay चाहे कौड़ी नियो या फिर से जो तेंतुली मंजी डिफरेंट थिला सेल दांतो माछर दांतो yes then आसिला तमन मेटालिक कॉइन्स ट्रू metallic coins for a paper currency and what is the present format today both digital metal और paper digital see paper currency metal भी अच्छी paper भी अच्छी but maximum what we are trying to prefer maximum कौन यूज होगी digital ना होंगे नहीं digital कौन and digital रे present context रे कौन cryptocurrency correct so this is the evolution process anyway so functions and evolution of the currency consider the following first house is a function pachare so primary function includes medium of exchange and unit of price yes you should able to measure the value and it should behave as a medium of exchange iya na okay so one ta thik achi jodi one thik achi two is wrong chalo I'll go to next two secondary function include value deferred payments and accumulation of value deferred payments and accumulation of value STD you can store the value you can transfer the value you can defer the payment means EMI वाला concept deferring the value for example तमे देखो ना एबे maximum iPhone वगैरह बिक्री हे जाउची या फिर लोकों पाखरे बाइक पळे आछे कार पळे आछे काहे कि बिकॉज़ तांको एट अ टाइम पैसा दवा पडुनी ना मासको 5000 टका लाखे कि मासको 10000 टका लाखे दे देले भी हिजिवो 12 मास मु दे देबी लखे 20000 टका गोटे आईफोन धरि बस जेबी ट्रू so this is what we called EMI deferred payment so that is the secondary concept secondary function of the money so दुईटा भी ठीक अछि जदी दुई ठीक अछि एटा गला केवल तीनटा देखियार अछि प्लास्टिक करेंसी yes ये जो पेपर करेंसी मझिरे पळे आसीबो प्लास्टिक करेंसी एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड व्हाट आर दिस प्लास्टिक कार्ड ना कार्ड ओटा तो प्लास्टिक ना so this is the earliest form of currency is this the earliest form of currency earliest form तो barter system ना then जदी commodity आस्ता ना चलो commodity barter system भितर कंफ्यूज हेता but plastic money that is a different one okay तीनटा काट देली 1 and 2 is that clear कार्ड आउट अछि चलो next consider the following statement regarding the National Population Stabilization Fund NPSF again factual it is a national level fund of 1000 crore national level रे गोटे fund create होची कहा पे ना National Population Stabilization Fund NPSF population ऊपर ये काम करिवो नारू ही जणा पड़ुची भाई it will be related to what population तो देखो it is a national level fund 1000 crore chairman होचंदी किए National Population Fund Stabilization Fund रो chairman होचंदी prime minister and vice president will be of the fund vice president will be Union Health and Family Welfare Minister okay goal कोन ना population stability by 2045 as per 2010 amendment long term stabilization by 2070 रे हमको long term stabilization दरकार and जदि तमे देखियो एथिरे होची target year for the population stability is 2045 that is correct chairman होचंदी किए तमरो ना chairman होचंदी तमरो prime minister vice chairman होचंदी तमरो
यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिकॉज पॉपुलेशन स्टेबिलिटी दरकार एंड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी से जो आशा वर्कर अंगनवाड़ी वर्कर से सब काम भी आस हाँ कि नहीं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलेटेड सो वाइस चेयरमैन फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर को रखी सो आंसर विल बी 1 2 1 3 चलो consider the following related to inflation measurement impact and policy response inflation measurement WPI what is WPI stands for wholesale price index. okay wholesale price index assign maximum weight to manufactured product 64.23 okay inflation benefits debtor and harms fixed income group inflation जदि होची मार्केट रे it will benefit the debtors and it will harms the fixed income group ता माने जे धार नेची ता पई इन्फ्लेशन ता बहुत बढ़िया ठीक अछि लेट्स सी करेंसी डिवैल्यूएशन इन इंडिया occurred in 1949 1966 and 1991 see this will be factual I can understand completely factual कि हाँ मत जाना अछि जाना नहीं I cannot remember everything correct but WPI which is talking about wholesale price index तो wholesale price index it is related to manufacturing only तो जदि तमे CPI देखिबो फूड को अधिक वेटेज मिल जाउथबो होंगी नहीं बट जदि तमे देखिबो WPI it will assign maximum weight to what manufactured product से manufactured product रे भी food रो consumption आसीबो होंगी नहीं food processing industries those are also being manufactured right होंगी नहीं तो WPI assign maximum weight to manufactured product this is correct तो पचाटी मते करेक्ट तो 1 टा तो डेफिनेटली करेक्ट अछि सेकंड इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेब्टर एंड हार्म्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप हाउ डू यू से कि एटा करेक्ट अछि ना करेक्ट नहीं कि मते बुझी परियो एनीवन कोन लागुची इन्फ्लेशन होची मु धार नै जे टाइम रे तो मते बेटर हो this is theory टिके कांसेप्ट अछि ओके चलो एक्सप्लेन करछु फॉर एग्जांपल मार्केट रे गोटे सिंगड़ा थिला सिंगड़ा न गोटे तार भाबिनो गोटे कॉइल रो तार रो दाम होची 100 टका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे 100 टका बर्तन आज डेट होची 2026 रे गोटे कॉइल रो दाम केते म कहली 100 टका 2027 रे से कॉइल रो दाम होची 110 टका मींस मार्केट रे इन्फ्लेशन केते परसेंट मु कहूची मार्केट रे इन्फ्लेशन होची 10% ठीक अछि केते परसेंट इन्फ्लेशन होची मार्केट रे 10% ना भाई 10% इन्फ्लेशन होंगी नहीं Yes, sir. ओके Sir, सर फाइन बर्तन भाबो 2026 रे का नानी भी संतोष मो पाखु आसिले मते कहले कि सर मते टिके धार देथिबे कि 100 टका मु कहले ठीक अछि संतोष तमे 100 टका नबो किंतु मते केते टका इंटरेस्ट दबो देन 8 टका रे दबो से कहले हां सर मु 8 टका रे दे देबे तो केते नेक्स्ट वर्ष से मते फेरेबे तो मु तांको 100 टका देली एंड सी मते रिटर्न फेरेबे केते मु जतले 100 टका देली संतोष को से मते रिटर्न केते फेरेबे 108 टका ना 108 टका आगे तो बर्तन तमे मते कुह प्रॉफिट रे के रहला सर जो डेब्ट जो मैंने ऋण नेली मु नेली संतोष तो Correct. आगे तो काहेकि ना बिकॉज तमे जतले 100 टका नेलो से 100 टका रे तमे भाबिनियो कॉइल टे किनि देलो 2026 रे तमे कॉइल टे किनि देलो तमे बर्तन से कॉइल टा को 2027 रे केते टका रे बिकियो 110 टका रे ना 2% प्रॉफिट मिलला सर अरे 2% तो नो 2 टका 110 टका रे 2 टका तो 2% रो तो कम मिलियो आगे बट एटलीस्ट यू आर इन द प्रॉफिट मोटिव करेक्ट नो ता माने जीए बोरो करूची इन्फ्लेशन टाइम रे सीए प्रॉफिट रे रहइबो ट्रू जीए बोरो करूची होंगी नहीं दैट मींस जदि मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि ताले लोन टेकर जे लोन टा नौची से प्रॉफिट रे रहइबो होंगी नहीं एठी भी तो सही है ना मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि संतोष जे बोरो कला सीए ही प्रॉफिट रे रहले जे धार देला सीए क्षति रे पड़िबो तो सीए वर्तमान कहूची कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर एंड हार्म्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स इज दैट करेक्ट नाउ डेब्टर को बेनिफिट दबो यस सर डेब्टर को बेनिफिट दबो फिक्स्ड इनकम ग्रुप जो माने अछथि फॉर एग्जांपल मोर भाई सेम ही आज भी 100 टका कमौतली काली भी मते 100 टका ही मिलिबो किंतु मोर परचेजिंग पावर कमी जाउची आज गोटे सिंगड़ार दाम जदि 5 टका अछि काली से सिंगड़ार दाम 6 टका किंतु मते 5 टका ही मिलुची
देन काली भी मते 5 टंका ही मिलिबो देन काली जेतले मते 5 टंका मिलिबो ना मो सिंगडाटा किनी ही परिबिनी ताले मु जदी फिक्स्ड इनकम ग्रुप रे अछि आज 5 टंका काली भी 5 टंका किंतु इन्फ्लेशन जदी अछि ताहले मु हार्म होबी ता माने कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप जो माने थिबे सेई माने हार्म हे जिवे इया ना ता माने सेकंड टा तो ठीक अछि होगी नहीं केत जण को बुझा पड़ला नहीं केत जण बुझा पड़ला नहीं डेप्टर वाला कांसेप्ट shall I explain again or it is fine okay तो दुईटा बुझा पड़ला then currency devaluation in India occurs in 1949 1966 1991 तो आकु टिके मन रखिया पड़ियो सो तीनटा को what is the explanation okay in India it happened 3 times currency को devaluation कराई okay now there is a concept related to कि तमे जदि currency को devaluate करिवो will it bring some profit to the country currency devaluation कले what is the currency devaluation कि कहे मते currency को devaluate करियो मु ता माने कोन इन currency को मु devaluation करियो ता माने कोन के तो बुझाओ सर तार मोड टा जो चेंज हबो माने करेंसी रो मोड माने जेमती डिजिटल फॉर्मेट की अलगा ना ना फॉर्मेट ना 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 not in that way मोड चेंज होनी सर डॉलर कंपेयर ताको कम करिएगा डॉलर के अदर करेंसी कंपेयर रे let's suppose $1 equal to presently 90 अछि मु जदि devalue करिवि ताले $1 equal to केते हबो 50 की 40 माने एमती निजे से रखो 40 50 how much you are saying 40 50 or सर ऑफिशियली सेटा पे 90 जदि अछि ताको से सेमन तांको हिसाब रे केते रिडक्शन करिवे हाँ डिवैल्यूएशन कली माने केते करिवि माने $1 रा वैल्यू टा केते हबो 90 रु अधिक हबो ना 90 रु कम हबो कम होबो सर सेठी ही मार खाइ जो करेक्ट नो 90 रु कम हैला माने तो डॉलर ही डिप्रिशिएट हैला ना भल से बुझो सी $1 इक्वल टू 90 रुपीस होंगी नहीं मु जतले Yes, कहूची कि मु करेंसी को डिवैल्यू करिवि इंडियन करेंसी विल बी डिवैल्यूड देन $1 इक्वल टू 100 रुपीस हवा कथा सी आकु एमिति तमे भाबो $1 रा वैल्यू 90 टंका अछि होंगी नहीं ताहले $1 जदि 100 टंका हला डॉलर रा वैल्यू बढ़िला ना कमिला बॉडी डॉलर वैल्यू कम बढ़िया बढ़िला ना बॉडी भाई आगुरु गोटे डॉलर को मु 90 टंका देकी किनुथिली एबे गोटे डॉलर को मु 100 टंका देकी किनिबी ताले डॉलर रा वैल्यू बढ़िला ना कमिला इंक्रीज राइट हां तो जदि $1 इक्वल टू 100 रुपीस हला ताले डॉलर रा वैल्यू जदि बढ़िला तार रेस्पेक्टिव रे ताले रुपी रा वैल्यू कोन हला कमिला ना बढ़िला कमिला सर डिक्रीज कमिला so you understood devaluation means devaluation in the sense $1 equal to जदि 90 अछि ताले $1 equal becomes 91 92 or anything but 90 रु तमे कमौछ सी चाइना एक्जेक्टली एया करूची चाइना कोन करूची करेंसी वार व्हाट इज करेंसी वार depreciating its own currency yuan currency को से डिक्रीज कर दोची $1 equal to जदि 50 yuan होची देन चाइना कोन करूची $1 equal to 100 yuan कर दबो देन एठी हबो कोन ताले मते कोना आ पर्सपेक्टिव जदि मते आकु मते देखिरा अछि देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट होप यू हैव रिमेंबर जदि पढिथिबो इकोनॉमिक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जणा अछि बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके चलो किछ नै तो एठी हबो कोन जनरली दे यू माइट हैव हर्ड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट यस सर ओके बट मु भाबिनियो लंडन रु गोटे लैपटॉप मगौची लंडन रु मगौची दिस इज इंडिया ओके एंड भाबिनियो समवेयर लंडन इज हियर लंडन रु मते लैपटॉप मगेयार अछि लंडन रु लैपटॉप टा मु मगेले मते $1 लेट सपोज $1 ही मते लैपटॉप कोन गोटे को गोटे प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट गोटे मु मगौची जदि मु किनिबी ताले मु कोन कली इंडिया को जदि से प्रोडक्ट आसिला सेटा मु इंपोर्ट कहिबी ना एक्सपोर्ट कहिबी सर इंपोर्ट ता माने इंडिया कला कोन इंडिया इंपोर्ट कला तो Okay. इंडिया इंपोर्ट कला एंड से प्रोडक्ट टा बेसिस रे इंडिया बाहर को केते टका दबो सर गोटे गोटे डॉलर आगे 90 रुपीस आगे तो इंडिया दबो गोटे डॉलर प्रेजेंटली जदि देखिबा इट इज 90 रुपीस होंगी नहीं जदि इंडिया डिवैल्यू कर देला ताले इंडिया को दबा को पड़ियो केते सेम गोटे डॉलर किंतु से गोटे डॉलर रा प्राइस केते हबो 100 टका ना होंगी नहीं जदि इंडिया करेंसी को डिवैल्यू कला
जो प्रोडक्ट रे आगुरु इंडिया को 90 टका दवा पड़ुला एबे ताकू केते टका दवा पड़ियो 100 टका बिकॉज़ डॉलर तो चेंज होने ना से प्रोडक्ट रो कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट रे $1 बुझियला सी Yes, sir, बुझे। लंडन रो प्रोडक्ट लेट्स सपोज गोटे चॉकलेट से चॉकलेट रो कॉस्ट डेयरी मिल्क नै जाओ से चॉकलेट रो कॉस्ट जदी इंडिया को आसीबो भी $1 रे बिक्री होबो जदी सेटा उगांडा को भी जीवो ना ताहाले भी $1 ही बिक्री होबो नाउ इंडिया कांसेप्ट रे जेतले मु से चॉकलेट टाको आनिबी मु आगुरु 90 टका दउथली एबे केते टका दवा पड़ियो जदी मु डिवैल्यू कली 100 टका ताले मोर इंपोर्ट टा कोन हैला कॉस्टलियर हैला होंगी नहीं यस सर यस ताले जेबे जेबे करेंसी डिवैल्यू हबो सेबे सेबे इंपोर्ट कॉस्टलियर ही जीवो तो इंपोर्ट जदी कॉस्टलियर हबो ना देश को कोन नुकसान हबो तेल रिलेटेड प्रॉब्लम हबो मैक्सिमम हम इंपोर्ट कोन करछे ऑयल ना ऑयल आउ गोल्ड ए दिटा करे हमको असुविधा ही जीवो बुझियला इवन डिफेंस इक्विपमेंट्स आल्सो सेई तमे सब सुनतो ना इकोनॉमी रे कि आत्मनिर्भर 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 ताकि हमर ए जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अछि ताकू मटे डिक्रीज करियार अछि बुझियला ओके बतन मते को एटा तो मु इंपोर्ट रिलेटेड कहली एक्सपोर्ट रिलेटेड कोन हबो आगुरु जेतले मु इंडिया रो गोटे जिंस बाहर को छाडुथिली बाहर मते कोन आस्तला डॉलर होंगी नहीं भाबिनो इंडिया रो मु बाहर को छाडीबे राइस राइस जगह रे मते भाबिनो $1 राइस मिलुतला 1 गोटे केजी रो दाम थिला $1 लेट्स सपोज सिंपलीफाई करिया पे मु कहू इंडिया यूएस को राइस पठेला गोटे केजी राइस को यूएस इंडिया को केते टका दबो $1 होंगी नहीं $1 इक्वल टू केते टका इंडिया पाउतला 90 टका जदी डी वैल्यू कला इंडिया केते टका पाइबो 100 टका 100 रुपीस ताहले चासी को तो फायदा हबो ना हबो ना हबो भाई आगुरु चासी 90 टका पाउतला एबे से सेही जिंसटारे 100 टका पाइबो चासी को फायदा हबो ना यस सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिवैल्यूएशन कि कंट्रीज दे प्रिफर टू डिवैल्यू देयर करेंसी चाइना करेंसी वार केमिति करथि डिवैल्यू करके काहेकि डिवैल्यू कले मार्केट रे से अधिक रु अधिक एक्सपोर्ट करि परबा किंतु क्वेश्चन होची इंडिया और चाइना केस रे देखियो चाइना रो प्रोडक्शन बहुत अधिक जेहेतु प्रोडक्शन बहुत अधिक ता पई मार्केट ताकू बाहरु दरकार बाहर मार्केट गुडा से कैप्चर करिया पई से डिवैल्यू कर दबो ताकि अधिक रु अधिक लोक तार निज लोक जो माने प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल चाइना 100 केजी प्रोडक्शन करजी से 100 रु 80 केजी से एक्सपोर्ट कर दबो डिवैल्यू करके बट इंडिया रे 100 केजी प्रोड्यूस कला बेलको आम पाखरे लोक निज लोक ही खाई जिवे हमकु दरकार पडुची मात्र 20 केजी एक्सपोर्ट करिया पई बुझियो छी किंतु आमे जदी डिवैल्यू कर दबा आम लोक कहे भाई निज मार्केट रे बिकोनी काहे ना निज मार्केट रे भाबिनो निज मार्केट रे राइस केजी प्रति दाम अछि 90 टका लेट सपोज निज मार्केट रे किंतु जदी मु एक्सपोर्ट कले मते 100 टका मिलियो बुझियो छी ताले मु निज मार्केट रे काहे बिकिबी बाहर बिकिबी होंगी नहीं देन प्रॉब्लम हो जो निज मार्केट रे इन्फ्लेशन हो जो धीरे धीरे निज मार्केट रे बिकॉज़ तम मार्केट रे सप्लाई कमी जीवो ना आ जदी सप्लाई कमी गला डिमांड थिबो लोक माने राइस डिमांड करथि मार्केट रे इन्फ्लेशन हो जो एनीवे दिस इज लिटिल ट्रिकी टॉपिक किंतु कांसेप्ट होची एतिकी ठीक अछि एठी क्वेश्चन थिला कोन ना डिवैल्यूएशन ऊपर गोटे थिला बोली मु तुमको जस्ट कहिली करेंसी डिवैल्यूएशन कि इंडिया केते थरो करछि एंड जेबे जेबे कोनोसी कंट्री जदी निजो करेंसी को डॉलर अगेंस्ट रे डिवैल्यूएट करिवो ताहाले प्रिफरेबली ता ऊपर सैंक्शंस वगैरह लागे तो बहुत रिक्वायरमेंट नथिले तमे डिवैल्यूएशन करिया कथा नो देन तारो तमे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दबो कि काहे की धीरे धीरे कम होती एंड डिवैल्यूएशन इज आल्सो नॉट गुड आल्सो बिकॉज़ इंपोर्ट भी तमरो कॉस्टलियर हो जेतेले तमे डिवैल्यूएट करूछ सेतेले तमे जेतेले ऑयल वगैरह किनिवो ना सेतेले तुमको अधिक पैसा भी देशरु बाहर को दबाको पड़िवो तो दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम सो इंडिया प्रेजेंटली जो देखियो आज पर्यंत 49 रे 66 रे एंड 91 रे तीन थरो करिछि इज दैट क्लियर दिस इज द फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement about the socialist economy is not correct pachari and pachari socialist economy the term socialist economy was first coined by Karl Marx kebe hobani the socialist pachari is not correct कोटा correct नुह तो socialist मार्क्सियन पर्सपेक्टिव होची socialist पर्सपेक्टिव होंगे यूएसएसआर वाला कांसेप्ट कैपिटलिस्ट वाला से कभी तो जिबे ही नहीं बिकॉज़ हैव एंड हैव नॉट वाला कांसेप्ट हैव वर्सेस हैव नॉट इकोनॉमिक डिटरमिनिस्टिक सर्च थे पर इकोनॉमिक डिटरमिनिस्टिक यस इकोनॉमिक डिटरमिनिस्टिक गवर्नमेंट प्लेज तो दिस इज करेक्ट ओनली ये ऑप्शन दा तो करेक्ट अछि जोटा कि से पचारि मते नॉट करेक्ट आई हैव टू चूज द नॉट करेक्ट वन गवर्नमेंट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल एंड स्टेट हैज द मेन पावर ट्रू सोशलिस्ट भाई होंगे नहीं सोशलिस्ट भाई माने पूरा तम कंट्री रे जति की भी रिसोर्स थिबो दैट रिसोर्स हैज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग एवरीवन जितले म कहूची अमंग एवरीवन ताले ताकू डिस्ट्रीब्यूट करिवो कि गवर्नमेंट ना
DPSP मन पड़ती सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड DPSP कहा ପାଇଁ କୁହା ହଉଛି गवर्नमेंट ପାଇଁ ना गवर्नमेंट ही କରିବା କଥା जदि ता पाखरे इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी अछि जदि से न कला ताले इट इज नॉट जस्टिसेबल ट्रू DPSP रे जो जिनसोडा लिखा है जदि सेटा गवर्नमेंट जदि न कला तो तमे कोर्ट रे जाकी थोड़ी कहबो कि भाई गवर्नमेंट काहे करूनी किंतु जदि गवर्नमेंट करी देला ताहले तमे कोर्ट जाई परियो ना जाई परियो नहीं व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन बुझा पड़ला ना आई एम सेइंग DPSP ପାଇଁ जदि गवर्नमेंट DPSP ପାଇଁ गोटे लॉ निहाती दरकार बुझा पड़ुछे DPSP ପାଇଁ गोटे लॉ दरकार फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करिया ପାଇଁ लॉ इज मैंडेटरी इज इट ट्रू फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करिया ପାଇଁ लॉ इज मैंडेटरी इज इट ट्रू ନାଇଁ sir, no. why because fundamental rights are self ସେଟା sir ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ individual rights को ଗୋଟେ ମାନେ ତ law କଣ ଦରକାର ଆସିବ ସେଥିରେ see by default it is enforced correct no ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା but DPSP को enforce करिया ପାଇଁ law दरकार हबो true or false ସେଟା sir true କାହିଁକି ନା state କରିପାରିବ ଆଉ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ମାନେ enforce କରିପାରିବ करि परियो हां करेक्ट सेति ପାଇଁ होची तो enforce केतेला करियो दुतला गोटे लॉ टे नै के आसीयो ना ଆଜ୍ଞା 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 फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड DPSP रे लिखा है लिखा है सर आर्टिकल 44 देन काहे कि तमरो न्यूज रे हंगामा चलतला UCC गवर्नमेंट आनिया को जाउची UCC कोन आनियो गोटे एक्ट नै के आसीयो ना जे पर्यंत से एक्ट न आसी से पर्यंत लागू भी होबो नै हंगी नहीं तो एक्ट आनिले ही लागू होबो जदि गवर्नमेंट एक्ट आनिने ना ताहले तमे जो कहौ छै ना कि इट इज नॉन जस्टिसेबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिसेबल दैट जदि गवर्नमेंट जे पर्यंत एक्ट टा आनिनी से पर्यंत तमे सुप्रीम कोर्ट को जाई कहबो कि भाई गवर्नमेंट काहे कि आनुनी एक्ट UCC टा लिखा है आर्टिकल 44 रे काहे कि गवर्नमेंट लागू करूनी देन सुप्रीम कोर्ट कहबो भाई हेडगुडा हमें सुनिबुनु गवर्नमेंट UCC नै आसला परे जदि तमरो फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची देन तमे आसो कोर्ट को हमें सुनिबु बुझियला ओके चलो से भीतर मु पसुनी बट ठीक अछि पॉलिटी रे जेते डिस्कशन हो जे भी करबे तांका सहित क्लैरिफाई करतब ओके एनीवे सो कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कार्ल मार्क्स दिस इज करेक्ट गवर्नमेंट प्लेज इंपोर्टेंट रोल and state has the main power this is also correct there is a complete economic freedom and power private ownership of resources very important private ownership of resources socialist means it has to be publicly distributed among everyone what is this private resources that means this is behaving as a capitalist होंगे नहीं see there is a socialist capitalist mixed economy होंगे नहीं yes sir ओके तो ये तो जाना पड़ेगा ना प्राइवेट जेतला से वाला भाई इट इज कैपिटलिस्ट देन ये सोशलिस्ट बिहेवियर पचाउजे ना सोशलिस्ट इकोनॉमी ताले आंसर शुड बी सी एंड द मेन पर्पस ऑफ इज सोशल वेलफेयर ये सोशलिस्टिक रो सोशल वेलफेयर तो ही हम तो कार्ल मार्क्स जे होचन जर्मन फिलोसोफर सी ही नहीं के आस्ते गवर्नमेंट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल स्टेट पर्पस होची सोशल वेलफेयर ये तीनटा ठीक अछि ओके consider the following statement regarding the concept related to national income again national income तो से गोटे पचाची Hindu rate of growth refers to about 3.5% annual growth in the first 3 decade after independence कि 1950 रो नेकी 1980 जाए तो हिंदू ग्रोथ रेट गोटे थिला कि मिनिमम इंडिया रो ग्रोथ रेट 3.5% हवा दरकार बर्तमान प्रेजेंटली जब तुम देखो जीडीपी रो ग्रोथ रेट तुम पढुतो ना कि 6.5 6.7 कि के कोच कि नहीं इट विल गो अबव 7% yes the term was propounded by professor Raj Krishnan in 1978 green national income ignores environment see ignores this is wrong green कथा कहउछ environment कथा कहउछ then it should include environmental degradation correct no तो तीन टा को मु काट देबी see for example ए क्वेश्चन मते जे लाउसी मु किछि जानिनी बट तीन देन तो माइंड तो खटेबी ना तो तीन नंबरटा मते लागुची भाई ग्रीन नेशनल इनकम कहा होची ठीक अछि नेशनल इनकम बट इट इज मेंशनिंग ग्रीन नेशनल इनकम ग्रीन माने एनवायरनमेंट रिलेटेड हेतियो बट एठी इग्नोर कराइछि ता माने मते एग्जामिनर ट्रिक करूची गोटे किछि गोटे वर्ड लगे दबो ताकि ये स्टेटमेंट को रॉन्ग करिया पे तो तीन टा को जदी मु काट देबी मोर तो दीटा ऑप्शन कटि गला वन तो बाय डिफॉल्ट ठीक अछि देन आई शुड नॉट थिंक अबाउट व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट बुझिला ना नहीं फरक पड़ुनी मु हिंदू ग्रोथ रेट जानि ना जानि होंगी नहीं
बस बर्तमान मते तुक्का मारियार अछि बिटवीन 1 2 और 1 टा तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट ना जदी 3 टा को मु डेफिनेटली रॉन्ग मारली भाबो कि एना तमे तो ए क्वेश्चन टा जानि छ ना जदी ए क्वेश्चन तमे जान नथांदा एग्जाम पर्सपेक्टिव रे फॉर एग्जांपल भरस हम देखिले एग्जाम रे क्वेश्चन आसीगला हाउ शुड आई ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मु पढिली चलो एथिरे किछि जानिनी चलो फॉर एग्जांपल as a beginner I don't know anything what is Hindu growth rate no worries go to the second one the term was profound by Professor Raj Krishnan 1978 I don't know maybe here there is a catch कि राज कृष्ण ही नथिबे या फिर 1978 रे भी ही नथिबो तो मे बी एथिरे दीदीटा पॉसिबिलिटीज अछि क्वेश्चन टाको रॉन्ग करिया पे ए क्वेश्चन टाको रॉन्ग करियारो 3.5% गोटे डाटा अछि जोटा कि ए डाटा टाको मु जदी 3.2% कर देबी ना देन क्वेश्चन भी रॉन्ग ही जिवो माने स्टेटमेंट टा तो रॉन्ग ही जिवो बुझि होछि ना नहीं देन थर्ड टा मुझे देखिए ग्रीन नेशनल इनकम एटी ग्रीन लिखा है एंड इग्नोर लिखा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग मते तो चाहे जदी टिके भी तमे दिमाग लगेबो ना ए तीनटा स्टेटमेंट रु केते जन लागो कि 3 नंबर स्टेटमेंट टा को सेमान को टिके फैमिलियरली सेमान एटा अटेम्प्ट करि परिबे केते जन लागो 3 नंबर टा हम कर परिबे 3 नंबर स्टेटमेंट टा को मु 100% रॉन्ग कर देबी खबर हमरे यस सी मते फास्ट दिटा को जणा ही नै ना ठीक अछि जणा नै किछि असुविधा नै बट 3 नंबर टा को जते आसी मते अटेम्प्ट करिया पई ग्रीन नेशनल इनकम इग्नोर लिखा है एनवायरमेंटल एंड आपको प्रैक्टिस कले ही आसीबो भाई धीरे धीरे एमिति न हठात खेला गोटे टेस्ट रो आसीबो यस इट इज अ नेगेटिव मीनिंग इग्नोर को है जी देन ग्रीन माने एनवायरमेंट सहित जीवा कथा बट हाउ कम इट इज इग्नोर से तीन टा को जदी मु काट देबी एटा कटिगला आ बाकी ऑप्शन रहला 1 एंड 1 2 तो 1 टा तो दी टांगर अछि देन मोर तो आधा टेंशन जो हिंदू ग्रोथ रेट व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट माइंड रे मु जो प्रेशर बनौत्री से प्रेशर बनेला दरकार नै बिकॉज़ 1 इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट आई हैव टू क्लिक 1 इज करेक्ट देन 2 टा को मु मारिबी कि मारिबी दैट इज तुक्का आ भाई आ कोन सी कांसेप्ट लागो केते मन रखि दो तो मते कोन रियलिस्टिक रे भाबो मन रखि दो सब किछि प्रोफेसर राज कृष्णन देन 1978 दैट्स व्हाई नो यू सी फटअप केते जाउ छी 200 मार्क को 75 95 और 100 ठीक अछि 100 नहीं जाओ 50% ना तो ठीक अछि जदी गोटे भूल इट्स फाइन बट यू सिलेक्टेड इट इन 50% नो एटलीस्ट तुमको एई दिटा भीतर मारियार अछि आ जदी के भाई एक पटु मारू छी ना 2 3 या 1 2 3 देन प्रॉब्लम यस ओपीएससी डाटा भूल करने दिटा गेस कर परबा यस ठीक अछि नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिगन होइता ओके बुक्स याको मु छाडू छी एटा चिरंजीत डिस्कशन करिवे consider the following statement regarding the types of international currency okay international currency katha se कहूची rare currency has demand exceeding supply in international market hot currency moves quickly in financial market Indian rupee is an example of rare currency okay if you see I am also not that much familiar about international currency चलो तो जदी मु एठी देखुची कि से गोटे कहूची कि rare currency has demanded भाबो मु क्वेश्चन टा किछि जानि मुई क्वेश्चन टा किछि जानि बट मु ट्राई करछि आपको अटेम्प्ट करिया पे देन मु कोन मो थॉट प्रोसेस हो कि इंटरनेशनल लेवल रे गोटे करेंसी पचार कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज दैट विल बी अवेलेबल इन इंटरनेशनल मार्केट तो से कहूछि कि एथरु मु जदी देखिबी मते गोटे रेयर करेंसी रो वर्ड मिलुछि गोटे हॉट करेंसी रो वर्ड मिलुछि ई है ना यस ओके तो बर्तमान से कहूछि कि जदी मु टू टा को पढी हॉट करेंसी मूव्स क्विकली इन फाइनेंशियल मार्केट हॉट करेंसी मोर गोटे कांसेप्ट मन थियो तो एफडीआई एफपीआई जदी कई पढी थियो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एमाने ए जो हॉट मनी वाला कांसेप्ट एमाने नै की चलाती हॉट मनी मींस जिते जल्दी से माने मार्केट को पैसा धरि के आसीबे सेते जल्दी से पैसा विथड्रॉ करके भी नै जिवे हॉट मनी तो हॉट मनी को जदी हॉट करेंसी कहबी इट मूव्स क्विकली इन फाइनेंशियल मार्केट मींस तर शेयर मार्केट हे जाऊ या फिर डेरिवेटिव मार्केट हे जाऊ बॉन्ड मार्केट करेक्ट नो तो फाइनेंशियल मार्केट रे हॉट करेंसी मूव्स क्विकली तो बाय डिफॉल्ट से पर्सपेक्टिव को मु जानिबी कि भाई हॉट करेंसी मूव्स क्विकली इन फाइनेंशियल मार्केट दुईटा तो ठीक अछि जदी दुई ठीक अछि ताले डी टा तो कटि गला देन 3 नंबर इंडिया रूपी इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर करेंसी सी रेयर करेंसी मु सेही करेंसी को कहि परिबी जो करेंसी माने जदी मु भाबुची रेयर करेंसी सेही करेंसी हो जो करेंसी रो वैल्यू सेते माने इंटरनेशनल ट्रेड रे होनो तो बट जदी रिसेंट रे तमे देखिबो दुबई सहित ट्रेड होतला हंगे नै यूएई सहित इंडिया एक्सचेंज होतला हंगे नै जदी तमे देखियो यूपीआई रो ट्रांसफर सिंगापुर थाईलैंड तांगर गोटे एफपीएस बोली कांसेप्ट अछि फास्ट पेमेंट सिस्टम जो थरे की एक्सचेंज होची ताले इंडिया करेंसी इज नॉट ए रेयर करेंसी तो तीन टा को तो मु भाई सिंपल देखिबी कि इट इज एन एग्जांपल देची
तो 3 टा को मु काटी देबी जदी 3 टा को काटी देबी ए ऑप्शन कटि गेला ता माने तो 2 टा तो बाय डिफॉल्ट ठीक अछि पते केवल ए 1 टा देखिया अछि रेयर करेंसी हैज डिमांड exceeding supply in the international market. I don't know anything. I have to go for tukka. Either 1 and 2 or 2 only. जहाँ तमे मारी परियो. Is that clear? See attempt करिया सिखो नहले प्रॉब्लम होबा आको धीरे धीरे सी सब तो क्वेश्चन तुमको आसीबनी 100% सब तो आसीबनी चाहे तमे जत्ते भी फैक्ट पढ़ी जाओ ओके बट अटेम्प्ट करिया सिखो कि हो चलो आई शुड अटेम्प्ट कि याकू किंतु फास्ट अटेम्प्ट रे अटेम्प्ट करियो भाई सिंपल जिंस कि जेतले मु पढिबी 38 नंबर मु जानली भाई इंटरनेशनल करेंसी पचारती आई डोंट हैव एनी होल्ड मु जानिनी मु केबे मो लाइफ रे मु केबे सुनिनी इंटरनेशनल करेंसी तो मु एना करिबिनी जेतले मु सेकंड अटेम्प्ट को आसीबी फर्स्ट सी इजी क्वेश्चन नले छाडी हिजबो 1 बाय 1 तमे केबे ट्राई करनी अप्रोच करिया पे ताकू डिवाइड करो टाइम को डिवाइड करो कि फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजी आई डोंट हैव टू से चिरंजीव सर तुमको कहि देबे स्ट्रेटजी बट ट्राई करो याकू जेतले सेकंड टाइम जेतले फर्दर रीलुक करिवो ना यस हां गेस रे भी हिजो ट्रू तो आकू जेतले फर्दर रीलुक करिवो सेति के बेले आकू अटेम्प्ट करिवो ठीक अछि फर्स्ट गेस फेस करिवो ने फर्स्ट जहां तमे जानि जो सेही थिरे रखिवो ताकि कॉन्फिडेंस लेवल परफेक्ट थिवो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलो देखि दवा आपको कौन देछि मु भी टिके सिखि जाय रेयर करेंसी डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई इन इंटरनेशनल मार्केट 2000 त रेयर करेंसी डिमांड जहार अधिक थिबो सप्लाई जति कि नै ताठो अधिक डिमांड जाय कि यूएस डॉलर को कहउछि रेयर सी मो कांसेप्ट ही गलत हला बिकॉज़ मु भाबुतली रेयर करेंसी माने से करेंसी जहार डिमांड बेसी नथिबो मार्केट रे बट इट इज इन ए रिवर्स वे फाइन नो इशू सो डिमांड जो करेंसी रो अधिक थिबो देन द सप्लाई इन इंटरनेशनल मार्केट दैट इज कॉल्ड रेयर करेंसी and it will have low circulation so circulation बेसी हो नथिबो hot currency it will move quickly in financial and stock markets indian rupee supply exceeds demand so if supply india market demand to supply जदी अधिक होला then it will not consider to be rare currency because rare currency रो concept होची demand अधिक थिबो supply is that clear concept ओटे खाली जस्ट जानले चलो we'll go to next question called demography consider the following statement about demography what is demography na demography is the study of population size which processes and problems population ro size तार process और problems ठीक लागुची किछ असुविधा नै गोटे जनरल स्टेटमेंट अछि डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ व्हाट ना पॉपुलेशन रो साइज तार प्रोसेस और प्रॉब्लम्स एकटा तो ठीक अछि जदी एक ठीक अछि सी कटिला फॉर्मल डेमोग्राफी स्टडीज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट आई डोंट नो नो वरीज आई डोंट नो सी ता माने न जे म ताको रॉन्ग मार देबी आई डोंट नो करेक्ट नो मु किछ चूज करू हार्ड बुझिबी सोशल डेमोग्राफी स्टडीज साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द पॉपुलेशन जदि म कहू सोशल डेमोग्राफी इट शुड स्टडी द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स साइज एंड वॉल्यूम आर नॉट सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट नो फॉर एग्जांपल कास्ट वगैरह देथांदा रेसिज्म वगैरह देथांदा इंडियन सोसाइटी बोले गोटे टॉपिक अछि राइट होनी नहीं तो जदि ए भलिया पचार थाना सोशल डेमोक्रेसी की एससी एसटी कैटेगरीज केते अछन वल्नरेबल सेक्शन केते अछन जदि से विषय रे पचार थाना देन मते एटा ठीक लागि थांदा बुझियो ना नहीं बट ये पचार कोन सोशल डेमोक्रेसी स्टडीज द साइज एंड वॉल्यूम देन आई डोंट थिंक सो सी तुमको लागुनी ए दिटा स्टेटमेंट देखो ए दिटा स्टेटमेंट रिवर्स कर देला लागुनी यस दुई तीन रिवर्स अछि बिकॉज़ सोशल डेमोग्राफी शुड टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी नहीं एंड फॉर्मल डेमोग्राफी it should study size see I don't know anything correct no but still from the question if I try to interpret मते लागुची सोशल डेमोक्रेसी रे साइज और वॉल्यूम काई पचरियो एठी सोशल इकोनॉमी देन सोशल डेमोक्रेसी शुड टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगी नहीं तो दुई तीन रिवर्स अछि ता माने दुई तीनटा तो रॉन्ग हे गला yes one statement रो मीनिंग रे गले दुई तीन भी रॉन्ग हे जो so only one I will go and I will explain okay तो देखियो से फॉर्मल डेमोग्राफी साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द पॉपुलेशन सोशल डेमोग्राफी स्टडीज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट सो स्टेटमेंट 2 and 3 are interchecked so this is done next with reference to population growth and mortality indicators mortality माने केते जण कोन चली गेले करेक्ट नो एंड पॉपुलेशन ग्रोथ केते जण रहउछ crude death report is the death per 1000 mid year population again data crude death report is the death number of death per 1000 mid year population no 1000 mid year population number of deaths per 1000 mid year population infant mortality rate includes children aged 0 to 5 years maternal mortality rate is calculated number of live births per 1000 women okay तो से बताची which of them are correct तो तुमको कोन लागु छे मत मु 3 टा जानिती मैटरनल मोर्टालिटी रेट 1000 लाइव बर्थ ठीक अछि सर चाइल्ड 0 रो 1 ईयर करेक्ट इन्फांट ता जोटा सेटा 0 रो 1 बोली पड़छि चाइल्ड 0 रो 5 अछि ठीक अछि
बट जदि इन्फांट कहूची ताले मु भी जानि कि दिस इज रिलेटेड टू 0 to 1 बट ये कहूची कि इन्फांट मोर्टालिटी रेट इंक्लूड्स चिल्ड्रेन एज ऑफ 0 to 5 अगेन लिटिल बिट एम्बिग्युअस करेक्ट मु जानि कि इन्फांट होची 0 to 1 0 to 5 होची चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इन्फांट सर मोर्टालिटी सेठी जो चिल्ड्रेन टा दे दीजिए सेठी पई 0 to 5 हबो सर नले किंतु इन्फांट मोर्टालिटी 0 to 1 बट जो इंक्लूड कर दीजिए चिल्ड्रेन सेटा 0 to 5 ही जो कना चिल्ड्रेन भी माने भी जीवे ना ता देरे बट दैट इज कॉल्ड चाइल्ड मोर्टालिटी रेट आगे correct no then infant mortality rate doesn't include child of 0 to 5 year age that is a separate concept this is a separate concept से concept रे जदि मु देखिबी that's what I am saying no this is an ambiguous statement एई भलिया स्टेटमेंट भी तुमको ओपीएससी रे भी मिलियो जोथिरे कि तुम एग्जाम देकी असला परे ना मेंस रो प्रिपरेशन छाडी कि अधा पिला एई ऊपर डिस्कशन करथियो कि भाई मोर ठीक अछि तार ठीक अछि जणा भी पडिबोनी कार ठीक अछि जे पर्यंत रिजल्ट न आछि करेक्ट नो देन तमे हां चलो तारा बाहरिबो की देन तमे अपील करिवो कि भाई दिस इज इन्फांट मोर्टालिटी रेट 0 to 1 ईयर यस एंड ये नॉट इवैल्यूएट भी ही पारे तेनु ता ऊपर बेसी फर्दर डिस्कशन न करके तमे जति की जानिचो जो हां सोर्स कोड करि परिबो आराम से कोड करके ओपीएससी को दियो लेट ओपीएससी टेक द डिस्कशन यस मैम सेटा जो लिखिछि इन्फांट मोर्टालिटी रेट इंक्लूड्स चिल्ड्रेन एज्ड 0 to 5 इयर्स माने चिल्ड्रेन जो माने कहले 0 to 5 इयर्स सेटा इन्फांट मोर्टालिटी रेट जे जाउची तेनु से स्टेटमेंट ता भूल हां जे जेमिति इंटरप्रिटेशन एरर आसी एथिरे जे जेमिति इंटरप्रेट आको कला बट 0 to 5 इन्फांट मोर्टालिटी रेट 0 to 1 सी 0 to 1 को तमे चिल्ड्रेन कहबोनी आ कोन तांको बुढ़ा बयस कहबो कि कहबोनी तो से पर्सपेक्टिव से देखिबो ए जो 5 ना ए डाटा टा मते टिके भूल भाल लागो सी आंसर कोन अछि मु जाननी बट 3 टा मु जानि छी कि 1 लाख लाइव बर्थ विषय रे 3 टा तो ठीक अछि मु आई विल गो डायरेक्टली टू द ऑप्शन 3 इज करेक्ट बी टा तो मु काट देबी ठीक अछि देन ओके आंसर भी ए अछि दुईटा को तो मु काटी दोची दुईटा को काटी देला आ केवल गोटी ही मिलिबो 1 and 3 तो 1 टा को मते टेंशन भी न मारन नतला कि व्हाट इज क्रूड डेथ रिपोर्ट रेट होंगी नहीं सी से हम कहू कि जतले क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो ना सी 3 ना स्टेटमेंट इट इज फाइन खाली इकोनॉमिक्स नो चाहे पॉलिटी हो चाहे तमरो एनवायरनमेंट हो चाहे ज्योग्राफी हो जदि तुमको 3-4 टा स्टेटमेंट अछि दोज आर इजी टू आंसर रादर देन ई जो सिंगल लाइन वाला जनरली कष्ट सिंगल लाइन क्वेश्चंस सिंगल लाइन क्वेश्चन देना देखिए वन लाइनर क्वेश्चन गुड़ा जनरली जो एसएसबी एसएससी एग्जाम गुड़ा करम जे जनरली से गुड़ा बहुत फैक्चुअल थिवो बुझी हो ना नहीं हां फॉर एग्जांपल ए जो चैप्टर देजी इथरु चैप्टर नो भाबी ना इन चारटा स्टेटमेंट देथिवो जनरली तीनटा ठीक थिवो गोटे ही रॉन्ग थिवो देन कहि देबो कोटा रॉन्ग जनरली एटा गुड़ा हो टाइम माने कष्ट टिके किंतु ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना जनरली एगुड़ा इजी तो तमे देखो ना मु कोन कहली 3 नंबर टा मु जानि जे जानथिबो एटलीस्ट जब 3 नंबर टा जानिचो तो आगो खोजिबो कि भाई 3 नंबर टा ठीक अछि जोटा 3 नंबर नाही एटा काट देबी मु बी टा को काट देली देन मु सेकंड टा को पढिली इन्फांट मोर्टालिटी रेट मु जानथि 0 to 1 ईयर बट एटी 0 to 5 ईयर देछि चिल्ड्रन एज एंड दुईटा को मु काटिली जदि दुईटा को काटिली आ बाकी ऑप्शन ही नाही ऑप्शन होजु 1 and 3 करेक्ट नो देन क्रूड डेथ रेट वाला कांसेप्ट मते पसियर भी नथिला ताकू बेसी भाबी कि मते टाइम वेस्ट करियर नथिला बिकॉज़ इट इज ऑल अबाउट टाइम करेक्ट नो व्हिच मैटर्स 2 घंटा भीतर तुमको एग्जाम क्लियर करियर अछि यस सो क्रूड डेथ रेट देखिनो डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन केते नंबर ऑफ डेथ होची मिड ईयर पॉपुलेशन भीतर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन भीतर केते डेथ होची इन्फांट मोर्टालिटी रेट इन्फांट्स बिलो 1 ईयर 0 to 5 वाला भूल अछि मैटरनल मोर्टालिटी रेट इट इज 1 लाख लाइव बर्थ रे केते जण मैटर माने मदर कर डेथ होची फाइन सो आई विल स्टॉप हियर तो 20 क्वेश्चन ही डिस्कशन हे पारुची ताठ अधिक हे ही पारुनी बट ठीक अछि बट होप इट इज फाइन राइट ये जति की होची ठीक ठाक रे ही जाउची ओके यस एनी क्वेश्चन को क्वेश्चन I'll take another 5 minutes. Any questions? सर सेटा जो इन्फांट मोर्टालिटी सेटा जदी एक्सक्लूड चिल्ड्रन हे थांदा सेटा भी ठीक हे थांदा सर सेटा माने क्वेश्चन फ्रेमिंग माने इन्फांट मोर्टालिटी रेट एक्सक्लूड चिल्ड्रन एज्ड 0 to 5 इयर्स सेटा भी हे जना सर ना तथापि क्वेश्चन आजियो ना कि 0 to 5 इयर्स भीतर 0 to 1 ईयर भी आछि ना आगे तो सेथिरे भी से स्टेटमेंट को पटा पटा दियो आगे ओके ठीक ओके सी सीते मु गोटे सेशन नउतली बोले समथिंग बहुत 4 मास तळे बोधे नैथले किछि थिबे लना तमे आई थिंक मनस्मिता मैम अपन थिले तळे कि किछि गोटे डिस्कशन करथि हां तो सेतळे मु कहउतली कि जो क्वेश्चन गोडा ना दीज आर आर्ट सब्जेक्ट ओके तो आर्ट्स सब्जेक्ट इट्स नॉट लाइक नीट और जेई वाला टाइप नीट और जेई रो क्वेश्चन जो तमे देखियो ना दोज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेक्ट
चाहे तमे जो भी फॉर्मूला लगाओ आंसर गोटे ही बाहर जदि आंसर दे 10 12 15 20 सीसैट भी तो तुम देखो सीसैट रे तुमको चाहे तुम किसी भी करो आंसर 12 ही बाहर ट्रू फॉर्मूला लगे 12 ही तो बाहर करिवो 10 15 20 तो बाहर नथो जदि 10 15 20 बाहरला से क्वेश्चन रिमूव्ड अनइवैल्यूएटेड बट एथिरे कोन ना एथिरे आर्ट सब्जेक्ट ओडा जनरली दे आर सब्जेक्टिविटी बिकॉज इंग्लिश रो लैंग्वेज ना तो एथिरे केवल जदि छेड़छाड़ करी हबो केवल इंग्लिश रो लैंग्वेज रे छेड़छाड़ करी हबो स्टेटमेंट पूरा क्लियर थिबो ताकू जदि मते रॉन्ग करियार अछि गोटे नॉट रो कीवर्ड गोटे पुरे देबी बुझ फॉर एग्जांपल ए स्टेटमेंट क्रूड डेथ रेट इज नॉट डेथ पर 1000 कोन करबो तमे देन ए स्टेटमेंट क्लियर थिला बट एठी जदि नॉट लगे देली ए स्टेटमेंट तो 100% रॉन्ग हिजो ना सी जनरली माने एमिति ही खेले बिकॉज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को मते ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करियार अछि ऑब्जेक्टिव मींस 100% आइदर इट हैज टू बी यस और इट इज नो सो सेथि में एम्बिग्यूटी जदि आसिला ना देन प्रॉब्लम हे जो सेथि में तो तमे देखो जेई नीट रे बेसिक क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई होएनी ई ओपीएससी यूपीएससी तथा भी टिके स्ट्रिक्टली इस माने फॉलो करंदी बट ओपीएससी रे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई जाय केवल ई चक्कर रे जदि क्वेश्चन रे एम्बिग्यूटी आसी वाला मींस ए जो स्टेटमेंट रे रीड आउट करिया बेलको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंक्लूड्स चिल्ड्रन एज्ड 0 to 5 years देन जदि इंक्लूड जागर एक्सक्लूड भी कर देली ताहाले भी हबो ही नहीं करेक्ट नो होंगे नहीं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट सॉरी अगेन सर हाँ इट्स फाइन नो इशू ओके एनी अदर क्वेश्चंस हाँ बताओ सोनाली अच्छी किसी क्वेश्चन ओके अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप सर 31 रे जो क्वेश्चन टा नथिला पेपर करेंसी रो सर सेटा जो 1861 सर देथिले सेटा बोधे गवर्नमेंट इशू ही करथिला 1861 रे किंतु 77 बेले को सेटा थिला प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला बैंक ऑफ बंगाल रे जो इंट्रोड्यूस हेतिला ओके 1861 रे गवर्नमेंट 1770s and 1861 1770s is like a different concept no say तम 1764 वाला बैटल ऑफ बक्सर रॉबर्ट क्लाइव वाला कांसेप्ट वारेन हास्टिंग वाला कांसेप्ट करेक्ट नो आज्ञा तो सेतले प्रेसिडेंसी थिला हां एबे भी 1861 रे भी कौन सी प्रेसिडेंट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर सेटा सटिके कंफ्यूज इंडियन काउंसिल एक्ट कहू ना आज्ञा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहू ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919 ना सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटा पेपर करेंसी टा 1861 रे गवर्नमेंट इशू करथिला बोली आसुची किंतु बैंक ऑफ बंगाल जो करथिला 1770 रे सेटा प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला आउ आरबीआई जतरा लॉन्च कला सेटा 1935 थिला ओके सुपर चलो थैंक यू एवरीवन एनी अदर क्वेश्चंस स्टिल आई हैव 2 minutes ओके तो बाकी जो गुडा फैक्चुअल थिबो एचरे तो मु छाडी देथिबी जोडा चिरंजीव सर तमर नै जिवे ओके गाइस फैक्चुअल जिंस जति रहला लेट्स विल डिकोड इट राइट डिकोड मतलब सेतरे बहुत किछि मेमोराइज करिवार अछि जिन तमो कहउतली ज्योति सर जो कांसेप्ट कहले राइट कांसेप्ट रो क्वेश्चंस ओपीएससी आसे किछि जगह आसे बहुत जगह आसे बिने वरीड होबनी ता पय जेतु इट्स अ पार्ट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एवरी टॉपिक्स रो किछि ना किछि क्वेश्चंस तुमको करितले आइडियास थिबो राइट एंड जिंति मो इकोनॉमिक्स रो कहउतली ओपीएससी रे इकोनॉमिक्स को हैंडल करबा बहुत इजी एज कंपैरिजन टू यूपीएससी यूपीएससी रे तुमको बहुत डेप्थ वाला दरकार किंतु ओपीएससी रे टिके इजी रहबो एंड ऑल द फैक्ट एंड डाटा यू हैव टू मेमोराइज इट जिंति हम सेंसस रिपोर्ट जिंति मो कहउतली जिंति 5 इयर्स प्लान कोटी ग्रोथ रेट कोन कार मोटोस कोन थीम्स कोन एवरीथिंग लाइक दैट राइट ताको मो कवर